Welcome. Good, very good, very good. Very nice, very nice, very nice. ये वर्ड्स सुन सुनकर मैं तो लिटरली बोर हो चुकी हूँ बिकॉज ये बहुत कॉमन वर्ड है। जब कोई स्टूडेंट हमारे वन ऑन वन कम्युनिकेशन सेशंस में आता है, हम उनको पहले इनिशियल वीक्स में ही गाइड करते हैं कि कैसे ये बोरिंग वर्ड्स को वो रिप्लेस कर सकते हैं विद सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स। हर जगह पे हम जाते हैं, किसी को भी हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हो ना, दिस प्लेस इज वेरी गुड, योर सर्विस इज वेरी गुड, यू लुक वेरी गुड, दैट डजंट लुक वेरी गुड एक्चुअली। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही 20 to 25 रिप्लेसमेंट्स जो आप वेरी गुड की जगह पे यूज कर सकते हो एंड अपने आप को एक काफी अच्छा स्पीकर दिखा सकते हो, काफी यू नो बड़ी रेंज की वोकैबुलरी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाउएवर सिर्फ वर्ड्स देखने से ऐसा नहीं हमारे माइंड में सारी चीजें फिट हो जाएंगी, हम बोलने लग जाएंगे, बट स्टिल फर्स्ट स्टेप इज टू नो दोज वर्ड्स। एंड अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आई एम श्योर आप कैसे ना कैसे करके उसको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूटिलाइज जरूर से करेंगे। सो विदाउट एनी डिले मैं एक छोटी सी अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ जहाँ पे मैंने अपने एक स्टूडेंट को डिस्क्राइब किया है, हमारे वन ऑन वन इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट है, कैसे वो एफिशिएंटली उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है जो कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प कर सकता है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। फाइन, so let's start now. So today we are going to see some words which we can use as replacement for very good in terms of places, people, objects, emotions, these kind of things. So can you see this? Yeah, madam. Places. Okay, fine. So kindly read it once. Breathtaking. 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 Damdar. Okay. The beach view was breathtaking. Samundar tat ka drishya damdar. Okay. And charming. Charming. The town had a charming atmosphere. Enchanting. मोहक मनमंत्र मगमूत करने वाला. The forest was enchanting at dawn. Picturesque. The village looked picturesque. पिक्चरस कहते हैं हम लोग, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है पिक्चरस होता है। पिक्चरस तो क्यू साइलेंट हो गया। यस। The village looked picturesque by the river. Majestic. शानदार. The mountain were majestic in the morning light. People. Okay. Admirable. सराहनीय. Her dedication is truly admirable. Okay. Brilliant. He is a brilliant problem solver. Charismatic. मोहक करिश्माई. She is a charismatic speaker. Inspiring. Her journey is inspiring to everyone. Astute. He is astute chatur tej. Okay. His astute leadership helped the team succeed. Okay. Durable. This phone is incredibly durable. Incredibly टिकाऊ. durable. Incredibly durable. टिकाऊ. Okay.
elegant, हम्म शालीन श्रृंगार. The vase has an elegant design. वास भी कह सकते हैं इसको मैडम ना, वास. वे वास, हाँ वास कह सकते हैं. एक्सी Exquisite, 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 exquisite. एक है उत्तम. The jewelry she wore was exquisite. Innovative, नवीन नया. This gadget is quite innovative. ओके, ये जो आप एक्यूसाइड बोल रहे हो इसको एक्सक्यूजिट बोलते हैं. एक्सक्यूजिट. Exquisite, करेक्ट. इनोवेटिव. exquisite. Okay. Innovative. The gadget is quite innovative. हम्म Top notch. हम्म The build quality हम्म of this laptop is top notch. हम्म इमोशन. Emotion. Uplifting. हम्म प्रेरक. Yes, ma'am. The conversation was uplifting. हम्म Heartwarming. दिल को छूने वाला. Their reunion was heartwarming. करेक्ट. उनका पुनर्जन्म दिल को छूने वाला था. ओके. Exhilarating, रोमांचक. It was an exhilarating experience. ओके. Okay. And satisfying. Completing the project was very satisfying. Gratifying, संतुष्टि देने वाला. Her success is gratifying to see. Okay, experience. मैं स्क्रॉल कीजिए इसको. Unforgettable, अविश्वसनीय. The concert was an unforgettable experience. यह संगीत कार्यक्रम एक अविश्वसनीय अनुभव था. ओके. Phenomenal, अद्भुत. The service at the hotel was phenomenal. Delightful. The dinner with the friends was delightful. Okay. Extraordinary. 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 Ordinary. Okay. The trip was an extraordinary adventure. Mind blowing. विषयकारी. Okay. The magic show was mind blowing. जादू का शो विषयकारी था. विस्मयकारी. माइंड ब्लोइंग. विस्मयकारी. ओके. सो फाइन. नाउ वी विल. Okay. So basically what you have to do, you have to talk about your hometown, okay? Which is Amritsar, right? And while Yes, ma'am. explaining about Amritsar, try to use these words. Okay? 5 words are in front of you. So while explaining about Amritsar, let's try to use these words. Okay. And I am living in Amritsar city. There are a lot of breathtaking views. Okay. Breathtaking views नहीं, breathtaking sights होगा. जगह. Sights. Sights. हाँ. Okay. व्यूज तो वो हो जाता है ना, जैसे हम व्यू किसी को मतलब देखते हैं. नजारा होता है. साइट्स मतलब जगह होता है. तो ब्रेथ टेकिंग साइट्स.
मतलब सुंदर, okay. साइट्स। हाँ। Okay, there are a lot of breathtaking sights, हम्म। and lot of people, lot of people enjoy it, and they get they हाँ, आप जो बोल रहे हो लॉट ऑफ पीपल एंजॉय इट, एक वर्ड होती है जिसको हम लोग कहते हैं mesmerized. So you can say travelers are mesmerized. Travelers are mostly mesmerized to see the, mesmerized. हाँ, to see या फिर to admit beauty and जो भी है, ब्यूटी, या फिर आप बोल सकते हो सेरेनिटी भी बोल सकते हो, ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। mesmerized का मतलब क्या, मीनिंग क्या आता है mesmerized का? मंत्रमुग्ध हो जाना, कोई मंत्रमुग्ध हो जाने मंत्रमुग्ध हो को जाना। mesmerized। हम्म। मेस्टमराइज मतलब क्या, कोई ओके, चीज इतनी अच्छी है कि हम अमेज हो जाते हैं ना, एकदम हमें वो मेंबर हो जाए, मेस्मराइज। स्पीचलेस हो जाते हैं। करेक्ट। हाँ, वो मेस्मराइज है। ओके, ओके, there are breathtaking sights, and lot of people get mesmerized after seeing this, and charming मतलब मनोहर। मैंने इसको थोड़ा सा जूम करे बस। ओके, ओके, मनोहर आकर्षण। ओके, and they also uh, they also enjoy charming joy of charming atmosphere, and मोक मंत्र मुग्ध करने वाला। There are also some special sites which which are which are which are getting us enchanting, ओके। getting us enchanting, and गेटिंग अस their picture एन्चेंटिंग। एन्चेंट enchant, जो है ये एक get एडजेक्टिव get है, इसको आप वर्ब के जैसे यूज नहीं करिए get आप। us enchanting, ओके, ठीक है। and yes ma'am, and their pictures lot. Okay, and they looked pictures, and majestic in the morning, and there are Golden lot Temple of is majestic, right? majestic, yes madam, there are lot of historical buildings are majestic looking majestic. ओके, फाइन। काफी सारे वर्ड्स आपने देखा, एंड आपको मैंने ये भी दिखाया कि कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे इन स्टूडेंट ने माई टाउन के बारे में बोला, माई होम टाउन के बारे में बोला, एंड इन्होंने ये सारे वर्ड्स कैसे यूज किए, राइट। इस तरह से आप भी वर्ड्स को जानकर क्वेश्चंस फॉर्मेट में या पैराग्राफ के फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो अपने स्पीकिंग पार्टनर, फ्रेंड्स, या अगर आपके कोई टीचर ट्रेनर है तो भी। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी पर्सनली हेल्प करें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में, देन करेंटली वी आर ऑफरिंग यू 15 to 25 मिनट फ्री वीडियो कंसल्टेशन कॉल। इस कॉल में आप आ सकते हो, ओपनली अपने सारी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हो एंड जान सकते हो एक पर्सनलाइज सॉल्यूशन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो अगर आप लाइक इंटरैक्ट करना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है फॉर 15 मिनट वीडियो कंसल्टेशन, उसको फिल करें, उसके बाद प्रेफर टाइम एंड डेट सेलेक्ट करें और इंटरैक्ट करें हमसे। एंड सेकेंड थिंग,
अगर जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे देखी है उसका एक नोट्स का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। सो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं और योर पर्सनल यूजेज प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।